सो न्यूरोलॉजी में पोस्टीरियर फोसा malformations को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसकी हेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आती हैं. नंबर वन इज़ कैरी वन malformation. It is a downward displacement of cerebellar tonsils through foramen magnum, and it involves only one structure, which is the cerebellar tonsils. Usually, it is asymptomatic in childhood. It manifests in adulthood with headaches and cerebellar symptoms, and it is associated with spinal cord cavitations. Example, syringomyelia. Basically, एक ही स्ट्रक्चर है, नॉट द इंटायर सेरिबेलम इटसेल्फ, बस उसके टॉन्सिल्स जो हैं वो फोराmen मैग्नम से नीचे की तरफ हर्निएट करते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में मैनिफेस्ट भी किया हुआ है. चाइल्डहुड में ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसका कोई एज सच सिम्टम भी नहीं पता चलता, लेकिन एडल्टहुड में बहुत ज़्यादा हेडेक्स और सेरिबेलर सिम्टम्स जितने भी होते हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं. And it is associated with spinal cord cavitations. इसमें syringomyelia या how you pronounce it, syringomyelia कहते हैं, तो उसके साथ associated है. Then comes Arnold Chiari 2 malformation. It is downward displacement of two structures basically, the cerebellum and medulla. और cerebellum में दो चीज़ें involved हैं. cerebellum का vermis भी involved है और cerebellar tonsils भी involved है, in addition to medulla, through the foramen magnum, and it leads to non-communicating hydrocephalus. It is more severe than Chiari 1. It usually presents early in life with dysphagia, stridor, apnea, and limb weakness. It is associated with myelomeningocele, usually lumbosacral. So, क्या उन्होंने symptoms बताएं कि dysphagia होता है, it's difficulty swallowing, और स्ट्राइडर कहते हैं ये एक हाई पिच्ड साउंड होती है जो कि ब्रीदिंग के दौरान महसूस होती है, और ये किसी भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट कर रही होती है. इसी तरह एपनिया क्या, इट इज़ अ टेम्पररी पॉज इन ब्रीदिंग. इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद स्लीप डिसऑर्डर्स. ठीक है. Then comes Dandy-Walker malformation. It involves agenesis of cerebellar vermis, यानी कि जो vermis component है cerebellum का उसकी ही generation नहीं होती, वो नहीं बनता, which leads to cystic enlargement of fourth ventricle. Because we know that posterior fossa का एक important structure है ना cerebellum, तो जब वो ही नहीं हमारे पास बनेगा तो fourth ventricle enlarge हो जाएगा. That fills the enlarged posterior fossa. It is associated with non-communicating hydrocephalus and spina bifida. So इन conditions में ये malformation देखी गई है. इसके बाद comes an important disease which is syringomyelia. इस डायग्राम में एक यहाँ पर एक cavitation दिखाई हुई है. It is syringomyelia. What happens in it? It is a fluid-filled gliosis-lined cavity within the spinal cord. अब ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर ग्लायोसिस लाइंड मीन्स के जो ग्लायल सेल्स होते हैं और वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं और एक इस कैविटी को लाइन कर देते हैं. एक येलो एरो से इन्होंने शो किया हुआ है. Fibers crossing an anterior wide commissure, the spinothalamic tract, are typically damaged first, right over here. इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि ये जो एंटीरियर कमिश्चर के जितने भी फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. वो कौन सी सेंसेशंस लेकर जाते हैं? पेन, टेम्परेचर. सो देयर इज केप लाइक लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन द बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज़. दोनों तरफ जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें सेंसेशन लॉस होती है. कौन सी सेंसेशन? पेन एंड टेम्परेचर. As the lesion expands, it may damage the anterior horns. अब अगर जितनी severity उसकी increase होती जाएगी, lesion expand करेगा, anterior horns में भी spread कर सकता है, which may lead to lower motor neuron findings. Lower motor neuron findings में क्या क्या आता है हमारे पास? Muscle weakness and paralysis, muscle atrophy, hypotonia, fasciculations and decreased reflexes, ये सारे lower motor neuron findings हैं. Now, what is a syrinx? It is a Greek word which means tube.
मोस्ट लेजन्स अकर बिटवीन C2 एंड T9, तो इनके दरमियान इन रीजन में ये लेजन्स मोस्टली होते हैं. It is usually associated with carry 1 malformation, and it is less commonly associated with other malformations, infections, tumors, and trauma. So they are very, clearly shown here कि ये this is the syrinx और ये expand कर रही है और anterior wide commissure के fibers को compress करेगी, उनको affect करेगी, जिसकी वजह से loss of sensations होगा. Now, coming to the anatomy and physiology, first of all, we'll be discussing the anatomy of the cells of the nervous system. It involves the neurons and non-neuronal or the glial cells. Neurons are permanent signal transmitting cells of the nervous system composed of dendrites, which receive input, cell bodies, and axons, which send output. Dendrites and cell bodies can be seen on Nissl staining, which stains the rough endoplasmic reticulum, um, which is not present in axons. यानी कि Nissl staining से we can clearly see dendrites and axons. और Nissl staining since RER के थ्रू होती है. RER सिर्फ सेल बॉडी वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स में, एक्सॉन्स में प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ की नस्ल स्टेनिंग भी नहीं होगी. मार्कर्स क्या है? न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन एंड साइनाप्टोफाइजिन. साइनाप्टोफाइजिन आई थिंक इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन बेसिकली एक इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन होती है जो कि न्यूरॉन्स में पाई जाती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एक्सोनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. और ये मार्कर यूज़ होती है फॉर न्यूरोनल डैमेज और डिजेनरेशन. ठीक है. एंड synaptophysin, it is a protein found in synaptic vesicles, and it is a marker for synaptic density and neuronal integrity basically. और neurological disorders के लिए ये भी as a marker यूज़ होती है. Then they say that CNS glial cells, they are derived from neuroectoderm except microglia, which are derived from mesoderm. So we'll delve into the details of the glial cells in a short while. बट ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हुई है कि CNS glial cells derive होते हैं neuroectoderm से. The peripheral nervous system glial cells they are derived from neural crest ectoderm. Myelin is a multi-layer wrapping of electrical insulation formed around axons. ये एक माइलिन शीथ की फॉर्म में डेपोजिशन होती है अराउंड द एक्सॉन्स. माइलिन है क्या? इट इज़ अ फैटी इंसुलेटिंग सब्सटेंस. तो इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज़ इंक्रीज्ड कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल्स बाय सॉल्टेटरी कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स at the nodes of Ranvier, which leads to increased sodium channel density. ये यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है कि वो स्पेसेस जिनमें माइलिन शीथ नहीं है उनको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. दिस इज़ द एंटायर डेपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ. और इसकी वजह से क्या होता है? इम्पल्सेस जंप करती हैं, उनका ट्रैवल टाइम कम हो जाता है और बहुत फास्ट और रैपिड तरीके से कंडक्शन होती है. Then comes the CNS glial cells. Number one is the astrocytes. Astrocytes की डायग्राम यहाँ पर शो की हुई है. These purple ones are the astrocytes. और इसके बारे में उन्होंने डिटेल्स क्या बताई हुई हैं? They say that astrocytes provide physical support, repair, removal of excess neurotransmitters, and it also serves as a component of blood-brain barrier. It is a glycogen fuel reserve buffer. Glycogen fuel reserve buffer, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, जो कि न्यूरॉन्स को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोजन जब ब्रेक करता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूरॉन्स को फिर ग्लूकोज की सप्लाई मिलती है. तो ये रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स बेसिकली
एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से न्यूरोनल फंक्शन और एक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहती है, पर्टिकुलरली उन कंडीशंस में जब एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या ग्लूकोज की डेप्रिवेशन हो जाती है, तो फिर तब ये एस्ट्रोसाइट्स काम आते हैं। इसके बाद इनके अंदर ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन GFAP ये प्रेजेंट होती है। ये भी एक इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है, और it is a marker for astrocytic activation or proliferation in response to brain injury. Then they say that the largest and most abundant glial cell in the CNS is astrocytes, reactive gliosis in response to neuronal injury. Reactive gliosis एक non-specific reactive change है glial cells का, mainly astrocytes का, जो कि CNS injury के response में होता है। इसमें क्या होता है? There is increased expression of this protein basically, glial fibrillary acidic protein. There is hypertrophy and excess proliferation of astrocytes, जिसकी वजह से glial scar बन जाता है, जो कि tissue repair और regeneration को affect करता है। Then comes oligodendrocytes. They myelinate axons in the central nervous system, including the cranial nerve 2, which is the optic nerve. Fried appearance histologically. Uh, oligodendrocytes भी myelination का ही purpose perform करते हैं, but they are present in CNS, और ये CNS में myelination करते हैं. Each myelinates many axons, around 30. Predominant type of glial cell is in the white matter. ठीक है, वाइट मैटर के अंदर मेन ग्लाइल सेल इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. इट इज़ इंजर्ड इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज एंड प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी. ये कौन कौन से डिजीज़ेज़ हैं इनको देख लेते हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, it is a chronic autoimmune disease जिसमें there is demyelination, inflammation and axonal damage in the CNS, जिसकी वजह से काफ़ी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे विजन प्रॉब्लम्स है, मसल वीकनेस है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है. इसी तरह जो ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज होती हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बेसिकली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि CNS के अंदर माइलिन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन होती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, और भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं. नाउ प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी ये एक सीरियस डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, जो कि एक वायरस की वजह से होता है, और ये ज़्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में होता है, जिसकी वजह से जो इसमें होता क्या है कि जो ब्रेन का वाइट मैटर है उसकी डैमेज हो जाती है, और इसी तरह न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे वीकनेस है, कॉग्निटिव डिक्लाइन है, और डिफरेंट विजन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. विजन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यस. Then comes ependymal cells. They're ciliated, simple columnar glial cells lining ventricles and central canal of spinal cord. Apical surfaces are covered with cilia, which circulate the CSF, and microvilli, which help with CSF absorption. So basically, जितने भी ventricles और cavities उनको surround कर रहे होते हैं ependymal cells. The specialized ependymal cells, choroid plexus, produce CSF. ठीक है. Then comes microglia. They are activated in response to tissue damage. They cause release of inflammatory mediators, example nitric oxide and glutamate. They are not readily discernible by Nissl stain. Nissl stain से इनकी presence का mostly नहीं पता चलता. Phagocytic scavenger cells of CNS इनको कह सकते हैं. HIV infected microglia, they fuse to form multinucleated giant cells in the CNS and HIV associated dementia. So इस condition में HIV associated dementia में जो microglia they form multinucleated giant cells क्योंकि वो एक aggregates बना देते हैं. In the peripheral nervous system glial cells, it involves the satellite cells and the Schwann cells. Satellite cells, they surround the neuronal cell bodies in ganglia, and they have similar supportive role as astrocytes. Schwann cells, they myelinate axons in the peripheral nervous system, including cranial nerve 3 to cranial nerve 9. Uh, cranial nerve 12. Um, इसी तरह हमने देखा था जो लिगोडेंड्रोसाइट्स थे वो CNS के अंदर माइलिनेशन का पर्पस परफॉर्म कर रहे थे. नाउ S100
इसके अंदर प्रेजेंट होती है। S100 क्या है बेसिकली, ये भी उसी तरह से जैसे हमारे पास ग्लाइल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन थी, ये भी एक इट इज़ अ फैमिली ऑफ स्मॉल एसिडिक प्रोटीन्स जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। तो दे आर यूजुअली मार्कर्स, ये भी मार्कर्स के तौर पर होती हैं फॉर एस्ट्रोसिटिक डैमेज और ग्लायोसिस, और इनके एलिवेटेड लेवल्स ये एसोसिएटेड होते हैं ब्रेन इंजरी और डिजीज़ के साथ। ठीक है। Each myelinates a single axon. Um, each Schwann cell myelinates a single axon, and it is injured in Guillain-Barré syndrome. I don't know whether I'm pronouncing it um, in correct way, लेकिन इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं हमारे पास, मसल वीकनेस होती है, नमनेस है, पैरालिसिस है, and it is often triggered by recent infection and it typically progresses rapidly over hours to days. So इस डायग्राम में उन्होंने तकरीबन सारे ही ग्लायल सेल्स शो किए हुए हैं। पर्पल ones are the astrocytes, then the microglia in the green ones, फिर न्यूरॉन दिखाया हुआ है, nodes of Ranvier, satellite cells, Schwann cells, और दिस इज़ इट। ठीक है, आज सिर्फ we have discussed about the cells of the nervous system, the CNS glial cells, the PNS glial cells, and some of the posterior fossa malformations.